Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 22nd of May. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. Its deadline has been extended to December 2025. Next thing we will be talking about DEPWD. They have organized Inclusive India Summit in New Delhi. What is this summit and what is the aim of the summit? We will be discussing in this video. Then we will be talking about Deport Darpan portal, Anna Mitra app and Anna Sahayata application that has been recently launched by Prahlad Joshi ji. Then we will be talking about a pilot apprenticeship scheme for youth that has been launched in the NER. What is this apprenticeship? This is basically internship scheme. Then Mizoram declared India's first fully literate state under Ullas initiative. What is this Ullas initiative? We will be discussing. These are the topics and many more will be discussed in this video, students. So stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. This video is quite important for all the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. We are talking about Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, right? This scheme was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs, and they have extended this scheme till 31st of December 2025, right? The original deadline of this scheme was 31st of March 2022, but now it has been extended to 31st of December 2025, right? Under this, what is the benefit of extended this scheme? The beneficiaries, now they will be getting more time in order to complete the housing, right? Their houses that for all, right? This scheme was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. It was launched in 2015 as a part of mission that was Housing for All. Correct? Take a note of this. Since the inception of this scheme, more than 92 lakh beneficiaries or 92 lakhs houses have been completed under this scheme. There are certain eligibility criteria here, right? That is EWS, the annual income should be up to 3 lakh rupees, not more than that. Then for low income group, 3 to 6 lakh rupees, middle income group from 6 to 9 lakh rupees, and slum dwellers, that is residents of informal urban settlement, right? These are the categories for the basically qualify for this Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. Right? Similarly, there was a scheme that is Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. Right? This is for families that are owning pakka houses, vehicles, mechanized farmers equipments or assets like refrigerators and have farmland or land greater or equal to 2.5 acres. Moving on, next is DEPWD, that is your Department of Empowerment of Persons with Disability. They have organized a summit that is Inclusive India Summit. Location is important. Where was this held? In New Delhi, right? Now, if we talk about the scheme in New Delhi also, where was this held? At IIC, that is India International Center in New Delhi. What is the aim of the scheme? Why was this scheme launched? Right, this scheme is basically talking about that how we can enhance the day-to-day activities or day-to-day lives of the persons with disability. During this summit also, a voice and WhatsApp based AI enabled chatbot was also launched that is currently under development, and it will be collaborated with Sarvam AI. Correct? Let me show you here. During this, AI-enabled chatbot was launched and it will be integrated with Sarvam AI. This chatbot is designed to enhance the access to information about the disability-related schemes and initiatives for the Divyangan, that is your persons with disability. The schemes that are launched by the Government of India, they will be availed or they will be told to these individuals, these services, the data for which will be available here. Apart from this, during this event, Mission Accessibility released their annual accessibility report card that highlights the current state of the accessibility across India and identify key areas of progress and challenges. Moving on, next, Union Minister Prahlad Joshi has launched Deport Darpan portal, Anna Mitra app and Anna Sahayata application. So 3 things has been launched here, right? First is your Deport Darpan portal, right? This is a self-assessment portal. This is your self
assessment portal, and it is a monitoring web portal that is aimed to depot officials to systematically assess and enhance their operations. It is strategically designed to help the food grains depots to achieve the highest standard of warehousing excellence. Correct? Take a note of this. Also, a grading framework has been introduced to evaluate these depots, right? These warehouses, correct? Based on the operational performance, their infrastructure, right? And many more. Then comes your Anna Mitra application. Now, what is this Anna Mitra application? This is an application, a mobile application. This is designed to meet the specific requirements for the key stakeholders under the PDS scheme, right? Public distribution scheme. Correct? Take a note of this. Through this digital application, the FPS dealers will be able to view the stock receipts, right? Access the monthly sales report, that how much sale was there in that particular month, and also give alerts to the authorities based on the data and the criteria set by them. Correct? So take a note of this. So we have seen Depot Darpan portal, Anna Mitra application, and third is your Anna Sahayata application. Now this Anna Sahayata application, this is a advanced citizen first grievance redressal platform. What is this? This is a grievance redressal platform, right? It is designed to address the grievances, the problems of the beneficiaries under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Correct? Currently the Anna Sahayata, it covers 5 states under the pilot project, that includes your Gujarat, Jharkhand, Telangana, Tripura and Uttar Pradesh. Right? Moving on, students. Next, here you can see Depot Darpan portal. Next is MSDE, that is your Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. They have launched a pilot apprenticeship scheme for youth in the NER. See, this pilot apprenticeship scheme, this is an internship scheme, right? It is launched for the youth in NER. What is NER? Northeastern region. In the Northeastern region. Correct? Take a note of this. And 43.93 crore rupees has been allowed or allocated for this pilot project. Under this scheme, the individuals, or approximately 26,000 youths, will be provided with apprenticeship or with various trainings or internships under different sectors, and they will be provided a stipend also of 1500 rupees per month for 1 year. Correct? And this implementation of the scheme is seen by Indian Institute of Entrepreneurship of Guwahati and NSDC, that is your National Skill Development Corporation. Next is Mizoram has declared India's first fully literate state under Ullas scheme. Now, first of all, remember what is this Ullas scheme? Ullas, it is an initiative, right? And it was your New India Literacy Program. It was launched by the Government of India to provide education to adults for a period of 5 years. This scheme was launched from 2022 till 27. It is a central sector scheme that aligns with the new education policy or National Education Policy 2020. This empowers the adults that are aged above 15 years from all the backgrounds who miss their formal schooling and help them integrate into society and contribute to the nation's growth. So it is Mizoram that has declared India's first fully literate state under this Ullas scheme. If we talk about Mizoram, who is the Chief Minister? Lal Duhoma. What is the capital? Aizawl. And who is the Governor? Vijay Kumar Singh. Moving on, students. Currently, we see Mizoram has currently achieved 98.2% literacy rate as per the periodic labor force survey. Next is Indian Army and NDRF, that is your National Disaster Relief Force. They have conducted exercise Rahat, and where was this held? In Nagaland. Take a note of this. Question will be asked. Exercise Rahat was held where? In Nagaland. It was held by whom? It was held by Indian Army and NDRF. And from Indian Army too, Spare Corps took part in this exercise. The first 2 days of this exercise was focused on strategic planning and scenario-based discussion, and it was held from 13th to 15th of May. Next is Department of Post. Right? They have released a commemorative postage stamp for 125 years of Kodaikanal Solar Observatory. Right? The denomination of this postage stamp is 5 rupees. Correct? And it is for celebrating 125 years of Tamil Nadu based Kodaikanal Solar Observatory. And this postage stamp was launched during an event that was held at Indian Institute of Astrophysics in Bengaluru, Karnataka. Correct? If we talk about this stamp features H-alpha image of sun taken at the KSO on 6th of May 2024. Moving on.
DPIIT, they have signed an MOU with GEAPP, that is your Global Energy Alliance for People and Planet. This MOU has been signed for climate tech entrepreneurship in India. That means the entrepreneurship, new startups should come that will focus on our environment, on technology based, that how can we incorporate technology, how can we use the technology to make our environment more better, right? We can improve our environment, correct? So this MOU has been signed here to support early startup or early stage climate tech startups in India, and this scheme has been launched for, or this MOU has been signed for next 2 years. Under this, you will be seeing the startups will be provided with funding, mentorship and growth opportunities. Next is international affairs. BRICS Energy Ministers Meeting 2025 was held where? It was held in Brazil. Brazil is also having the presidency for BRICS, right? They took this presidency from Russia, and in Russia, Kazan Declaration was held. So coming back, BRICS Energy Ministers Meet 2025, it was held in Brazil. It was held under a theme that is strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance. And from India, Manohar Lal Khattar, who is the former Chief Minister of Haryana and current Minister of Power and Union Minister of Housing and Urban Affairs, took part in this event. Also, India here highlighted that India has achieved 475 gigawatt of electricity capacity generation in 2025. This is a 90% increase over the past decade, and the target here is to achieve 900 gigawatt of electricity generation by 2032. Take a note of it. Moving on, next is Indira Gandhi International Airport ranked 9th as 9th busiest airport for 24-25 as per the data released by ACI World. That is your Airport Council International World. This is the organization that released this data, and it is the 9th position that is Indira Gandhi International Airport secured. This is in New Delhi, right? And according to this data, IGIA, that is Indira Gandhi International Airport, they handled almost 77 million passengers in India. Which is the position, or which is the airport that secured the first position? It is Atlanta Hartsfield Jackson Airport that also in 2024 they saw almost 108 million passengers, right? Then Dubai International Airport, Dallas Fort Worth International Airport, Tokyo Haneda and London Heathrow, and on 9th position is Indira Gandhi International Airport. The next question can be asked here, which organization released this data? It was released by Airport Council International World, that is Montreal, Canada based. Next is USA became India's 4th largest crude oil supplier. Very important, students, right? Which is the 4th largest crude oil supplier, right? For India, it is USA. And a data from London, UK based energy cargo tracking firm Vortexa. This is the organization that has released this data that stated that USA has surpassed UAE in April 25 to become India's 4th largest crude oil supplier. India's crude oil imports from USA doubled to 0.33 million barrels per day, and India represented 8% of the USA crude exports in April 2025. Correct? Take a note of it. Your homework, students, here is to tell me which is the country from which India imports highest crude oil. Next, IIFT to establish first offshore campus in Dubai, UAE to expand Indian education globally. I repeat, Government of India, they have established their first offshore campus of New Delhi based Indian Institute of Foreign Trade, that is an autonomous institution under the Ministry of Corporation and Industry, and where it has been set up in Dubai, UAE. It will contribute towards the global expansion of the Indian higher education, which aligns with National Education Policy of 2020. Next is Encash. They have launched India's first payment gateway built for SMBs and startups. I repeat, Encash. This is Mumbai, Maharashtra based India's leading spend management and payments platform. They have officially launched Encash Payment Gateway, that is a first of its kind solution engineered for the SMBs, that is small to medium sized startups and merchants. This will cater to India's over 63 million SMBs and startup merchants, addressing their unique payment processing needs. If we look at the data, India processed over 14 lakh crore in UPI transactions in March 2024 alone, and 20 to 30% failure rates during the peak hours. Manual recognitions that slow down the decisions and cause revenue leakages, and disjointed systems offer no unified control across the payment and the spends. Here, all these will be provided by Encash. Right? Next
Next is Star Health Insurance. They have launched Star Flexi variant under Superstar plan. I repeat, India's largest retail health insurer, that is your Star Health and Allied Insurance Company, they have expanded its flagship health plan, that is Superstar, with the introduction of Star Flexi. With this Star Flexi expansion, 3 new play variants, that is Essential, Preferred and Secure, have been introduced here. If we talk about them, these are giving various benefits to different income bases. If we talk about Star Health and Allied Insurance Company, who is the Managing Director and Chief Executive Officer here? Mr. Anand Roy, headquartered in Chennai, Tamil Nadu. Next is MMRDA. MMRDA is your Mumbai Metropolitan Region Development Authority. They have secured a 1500 crore rupees loan from BOM, that is Bank of Maharashtra, for the slum redevelopment. Take a note of this. This will be the first phase of the Slum Rehabilitation Authority project, and this will be worth 8498 crore rupees that will be spent to redevelop this slum. Correct. This government agency here, the government agency will redevelop the Ramabai Ambedkar Nagar and Kamraj Nagpur in Ghatkopar. Here you will be seeing various amenities such as your gardens, healthcare centers, educational institutions, right? And more than 5,000 apartments will be coming here. Next, if we talk about Bank of Maharashtra, who is the Managing Director and Chief Executive Officer here? Nidhu Saxena, headquartered in Pune, Maharashtra. Next is HDFC Bank. They have launched Biz Plus current account to support the MSME sector. See, this Biz Plus current account, this will meet the evolving needs of the India's MSME sector, right? This account will address the evolving financial needs of the business across 4 stages of the startup, that is your setup, growth, expansion and diversification. Correct. Here you will be seeing the accounts are structured in tiers to suit different business stages, that is your Biz Lite Plus, Biz Pro Plus, Biz Ultra Plus, Biz Elite Plus and so on. Then next is awards and recognition. India's Banu Mustaq and Deepa Bhashti has won the International Booker Prize 2025 for Heart Lamp. As you can see her in the picture here, she is Deepa Bhashti and she has won the International Booker Prize 2025. Correct. Take a note of this. I repeat, she is Banu Mustaq, right? She along with Deepa Bhasti, they both have won this award. Correct. This is for their Kannada short story. What is that story? It is Heart Lamp selected stories. So Banu Mustaq and Deepa Bhashti, they have won this International Booker Prize 2025. This award will be, and this was announced in London, UK. Correct. And here Banu Mustaq became the first Kannada author and the first Muslim woman from India to win the International Booker Prize. Next is China's Miao Leije and Japan's Yuko Oga named as the ambassador for the FIBA Women's Asia Cup 2025. What is FIBA? Federation International de Basketball. Correct. So from Chinese basketball legend Miao Leije and Japanese basketball icon Yuko Oga, they have been named as the ambassador for the FIBA's Women Asia Cup 2025. This will be the 31st edition of the FIBA Women's Asia Cup. It will be held in Shenzhen, China. And this marks the first time China will host the event in 10 years, with the last edition that was hosted in 2015. Moving on. Next is CCI approval, students. Let's look at them. First is Bajaj Group's proposal to acquire Alliance stake in insurance joint venture for 24,180 crore rupees. Second is the approval of the acquisition of majority shareholding in Nazara Technologies Limited by 3 entities, that is Aksana Estate LLP, Plutus Wealth Management LLP and Junomotia Fisol Plymet Limited. They will be acquiring the stake in Nazara. Then third is your Singapore-based Temasek Holdings Limited. They propose the acquisition of minority stakeholding in Haldiram Snacks Food through their subsidiary Zhongsong Investment Private Limited. Also one more, remember, 361 WAM Limited, right? They propose the combination acquisition of Baltiwala and Karani Securities Private Limited. So remember these 3-4 approvals. Next is Singapore's Singtel. They sold 1.2% stake in Bharti Airtel for 2 billion Singapore dollar. That is approximately $1.54 billion or 13,182 crore rupees. So it is Singapore's Singtel. This is the company. They sold 1.2% stake of their in Bharti Airtel
right? And this is for 13,182 crore rupees, and it was sold to in an investment arm, that is Pastel Limited. Next is sports related students. Pankaj Advani has clinched the third consecutive CCI Billiards Classic title 2025. It was held in Mumbai, Maharashtra, and he defeated Dhruv Sitwala by 5-2 in the final. Correct? Take a note of this here. Direct question. Then we move to Obituary. Padma Vibhushan awardee M.R. Srinivasan has recently passed away. As you can see him in the picture, he was a former Atomic Energy Commission chairperson who recently passed away at the age of 95 in Ooty, Tamil Nadu. Right? Remember, he was born in 1930 in Bengaluru, Karnataka. Then he joined Department of Atomic Energy in 1955. He closely worked with Dr. Homi Bhabha on their first nuclear research reactor, Apsara, which initially started in 1956. Then apart from this, he was honored with Padma Shri in 1984, Padma Bhushan in 1990, and Padma Vibhushan in 2015. Next is noted astrophysicist and Padma awardee Dr. Jayant Vishnu Narlikar. As you can see him in the picture here, he recently passed away, right, at the age of 87 in Pune, Maharashtra. He was honored with Padma Bhushan, that is the third highest civilian award, in 1965 in the field of science and engineering, and in 2004 he was honored with Padma Vibhushan, that is the second highest civilian award in the field of science and engineering. Next, also remember, he was also honored with Kalinga Prize in 1996. Then Maharashtra Bhushan Award in 2010, that is the highest civilian award by the government of Maharashtra, and Sahitya Academy Award also in 2014. Next, let's move to the important days. International Tea Day observed on 21st of May to celebrate, to recognize the cultural, economic and social significance of the tea across the world. This year it was the 6th edition of the International Tea Day that was observed, right? Take a note of the students, very important. Next is World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, observed on which day? On 21st of May, right? This day is to highlight the importance of cultural diversity, intercultural dialogue and sustainable development. This day is observed by UNESCO. And first time this day was observed in the year 2003. Next is National Anti-Terrorism Day, observed on 21st of May. This day is to raise awareness about terrorism, and basically this day marks the death anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi ji, who passed away, or who was assassinated in 1991 by a suicide bomber, correct, in Chennai, Tamil Nadu. This day raises awareness about the people to the people about the impact of terrorism on the human lives and society. And this year it was the 34th death anniversary of the former Prime Minister of India, or the 6th Prime Minister of India, Rajiv Gandhi ji. Correct. Then if we talk about Global Terrorism Index, in this Global Terrorism Index, our country stands at 14th position. Right? Here you can see we talk about top 5 most affected countries according to this Global Terrorism Index. First is Burkina Faso, second Pakistan, third Syria, fourth Mali, fifth Niger, and on 14th position is our country India. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. According to the April 2025 report by Moody's Rating on Emerging Market, what is the projected growth of India's GDP for FY26? So Moody, they are projecting India will be growing by 6.5% in FY26. Next, which state's forest department in India released the synchronized vulture survey 2025, that is talking about the vulture population across the part of southern India, and it is saying that there has been a growth. That means the population of the vultures in India has grown. So question asked is which state's forest department it is? It is Tamil Nadu State Forest Department, right? Also take a note of this. And this is the third population estimation survey on vultures that was done. And there are approximately 390 vultures that are to be found in Tamil Nadu. Next, on 8th of April, UNESCAP, that is United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, they have released Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2025. What percentage of the annual GDP loss has been projected by UNESCAP in 1/3 of Asia Pacific countries due to the climate related disasters? So what percentage has been allocated, or how much percent
of the annual GDP. Here the loss has been projected by UNECAP. Correct? So how much percent it is? It is almost 6% that has been projected here. Also, as we saw, India's GDP forecast for 2025 is also 6.5%, and inflation has also eased down to 4.3 to 4%. Next, in April, the Ministry of Panchayati Raj, they have released the first Panchayat Advancement Index, PAI. It is a baseline report that is talking about the sustainable development goals that are being followed by the panchayats at the grassroots level, right? The initiatives they are taking, the development we are seeing in those panchayats, right? And the action plan they are promoting. Question asked is, identify the state that is not among the top 5 performers in this particular report. So among the following, it is Gujarat that secured the first position, then Telangana, it is on second, Tripura is on third position, Maharashtra is on fourth position, UP is on fifth position, and Tamil Nadu is not among the top 5 here. Next, which of the following airports is not in the list of the top 5 airports announced at the Skytrax World Airports Award 2025 held in Madrid, Spain? So, Hong Kong International Airport is not in the list of the top 5 airports here announced, right? Singapore Changi Airport on the first position, Doha Hamad International Airport on the second position, and Tokyo Haneda Airport on the third position. Next, Moody's Analytics, this is a subsidiary of Moody Corporation. They have revised the India's GDP growth forecast for CY25, that is calendar 25, down to what percentage? So they have reduced the growth here to 6.1%. Earlier they were projecting it to grow by 6.4%, but now we have seen a reduction of almost 30 basis points. Next, as per the report released in April by Niti Aayog, India's hand and power tools trade is a part of the global market currently that is valued at $100 billion. Question asked here is that the global market is projected to expand to dash by 2035. So here this hands and tool and India's hands and power tool trade, it is that is $100 billion currently valued. It is expected that it will be $150 billion by the year 2030 in the next 10 years. And India can achieve a 25 billion plus dollar trade in exports in the next 10 years. Next, what is the, I correct myself, I think I have mentioned wrong. It is not $150 billion, but it will be $190 billion. Option 3 is right here, right? Next, what is the estimated total value of India's export that includes your both merchandise and service for FY25 as per the Ministry of Commerce and Industry released in April 2025. So what is the estimated total value of India's export? It is $820.93 billion. If we talk about the merchandise export for FY25, it stood at $437.42 billion, right? Similarly, this is export we are talking about, merchandise export. And if we talk about the merchandise import, it stood at $720.24 billion. Next is, which country was India's largest trading partner in FY25 with bilateral trades reaching $131.84 billion? So which is this country? It is United States of America, USA, right? And China was on the second position with $127.7 billion, while UAE, we are at $100.5 billion, right? This amount, right? This is the bilateral trade amount, right? That means both import and export. Next, which Indian airport secured the 9th position in the passenger category in the world's busiest airport ranking released by Airports Council International World in April 2025? It is Indira Gandhi International Airport of New Delhi, right? They have secured the 9th position in the passengers category in the world's busiest airport, right? Take a note of this. And it is USA's Hartsfield-Jackson Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, that is the world's busiest airport, and they are handling over 108 million passengers annually. Correct? They handled this in 2024 to be precise.
Next, mention the organization that released the State of the Social Protection Report, the 2 billion person challenge in April, highlighting that 3 out of 4 people in low income countries lack access to social protection service. So mention that organization. Which is that organization? It is World Bank. This organization has released this report, and 3 out of 4 people in the low income countries, they have no access to social protection services. One more thing, remember, this report was developed by World Bank's Aspire. What is Aspire? It is Atlas of Social Protection Indicators of Resilience and Equity team. So Aspire team developed it. Next, what is the projected growth rate of Indian economy for calendar year 25 as per the report, that is Trade and Development Foresights for 2024 released by UNCTAD. So projection is about 6.5%. Next, in April, which organization released the Global Education Monitoring Report, revealing that only 60% of the countries have legislations or standards regulating foods and beverages in schools, raising concerns over the global commitments to student health. So which is this organization we are talking about? It is UNESCO. Correct. Next is, which of the following institutions is not among the top 5 in the 2025 Asia University rankings released by Times Higher Education? So which of the following institution is not among the top 5? It is IISc Bengaluru. If we look about the top 5, Tsinghua University of China secured first position. Then Peking University of China second position, National University of Singapore third position, Nanyang Technological University of Singapore fourth position, and the University of Tokyo on the fifth position. Next, as per the World Bank report, that is India Poverty and Equity Brief for April 25, India's extreme poverty, that is people living on less than $2.15 per day, has dropped to what percentage in 22-23 from 16.2% in 2011-12. So from 16.2% it has reduced drastically to 2.3%. The report further showed that 17.1 crore people, they have been lifted out of extreme poverty, and almost 37.8 crore people, they have moved above the broader poverty. Next, mention the organization that launched a report, World Social Report 2025, a new policy consensus to accelerate social progress in April 2025. So this report was released by United Nations Department of Economic and Social Affairs, and around 60%, according to this report, around 60% of the global population, they face economic insecurity, while over 690 million people, they continue to live in the extreme poverty. This we are talking about globally. Next, as per Asian Development Bank, they collaborated with the World Economic Forum, and they have released a report, ETRA, that is your Energy Transition Readiness Assessment. This is for the developing Asia and the Pacific. This report stated that clean energy investment in the developing Asia has surged by over 900% from 2013 to 2023, reaching how much value in 2023? So it has reached to $729.4 billion. Correct, take a note of this. And we have seen a surge of almost 900% here. Next, students, let's move to the homework section. First question, Snack. This is a 15-minute food delivery platform launched by which company? Second, tell me recently who was conferred with the Parvasi Bharatiya Samman Award during the 18th Parvasi Bharatiya Divas? When do we observe this day, and who was honored here? Third question, tell me recently, if I ask you, when do we observe NRI Day? Give me the theme also, right? Parvasi Bharatiya Divas, same thing I have asked. Fourth question, World Hindi Day, when do we observe this? Fifth question, National Youth Day, when do we observe this? Give me their themes also, right? Then apart from this, tell me one more question, that recently, you know that Mahakumbh was held, right? So in Mahakumbh, PhonePe, they partnered with which bank in order to provide insurance, right? Or to offer Mahakumbh Mela insurance. Tell me the name of that bank. So that's all for the day, students. These are your homework questions, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.
हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 22 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है दिसंबर 2025 तक। देन हम बात करेंगे इंक्लूसिव इंडिया समिट जो कि अभी ऑर्गेनाइज कराई गई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा। रीजन बीइंग कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, दिव्यांगन है, उनको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कैसे बेटर सर्विसेज उनके लिए लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपो दर्पण पोर्टल, अन्ना मित्र एप्लीकेशन एंड अन्ना सहायता एप्लीकेशन, इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद बात करेंगे एक पायलट अप्रेंटिसशिप स्कीम जो कि यूथ के लिए लॉन्च की गई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एंड कौन सी वो स्टेट बनी है जो कि पहली फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गई है उल्लास इनिशिएटिव के अंदर। ऑल दीज न्यूज़ एंड मैनी मोर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहने वाला है। ऑल्सो अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं जो आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2025 तक। ये डेडलाइन जो थी वो पहले आपकी 31 मार्च 2022 थी। ये स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, मतलब पक्का घर यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, राइट। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया भी है कि जहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, कैसे के लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, जैसे EWS, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, स्लम डेवलपर्स एंड सो ऑन, ठीक है। इसी के अलावा एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी स्कीम है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इनके ये आपकी बेसिकली डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है, एंड इन्होंने एक इंक्लूसिव इंडिया समिट को ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पर? IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था 15 मई को। इस इवेंट का बेसिक एम क्या था कि हम कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एम्पावर कर सकते हैं, कैसे उनको न्यू टेक की मदद से हम उनकी लाइफ को और डे टू डे लाइफ को और इजी बना सकते हैं, राइट। बेटर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड अगर उनको स्किलिंग की जरूरत है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड सरकार के द्वारा जो स्कीम्स रिलीज की जाती हैं, राइट, उनका बेनिफिट तक इन तक पहुंच सके, उसकी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंच सके, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसी के अंदर आप देखेंगे कि अभी एक AI एनेबल्ड चैटबॉट भी लॉन्च किया गया जिसको सर्वम AI के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, एंड मिशन असेसिबिलिटी ये लॉन्च किया गया, रिलीज देयर एनुअल असेसिबिलिटी रिपोर्ट कार्ड, जिससे जो असेसिबिलिटी सेक्टर है अक्रॉस इंडिया, राइट, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है, उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करने का काम किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे प्रहलाद जोशी जी, इनके द्वारा डिपो दर्पण पोर्टल। सबसे पहले डिपो दर्पण पोर्टल की बात करें तो ये डिपो दर्पण पोर्टल एक सेल्फ असेसमेंट एंड पोर्टल रहेगा, जो कि एक वेब पोर्टल है बेसिकली, जिसका काम रहेगा कि जो डिपो ऑफिशियल्स हैं, राइट, वो अपने ऑपरेशन को एनहेंस कर सकें, जो कमियां हैं वो यहाँ पे सामने आ सके एंड उसको एलिमिनेट किया जा सके। इससे क्या होगा, जो फूड ग्रेन्स डिपोज हैं, राइट, जो बेसिकली हम बोलें जो वेयर हाउस है जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, कि उनको हम कैसे एसेस करें, क्या क्राइटेरिया रखा जाए कि वो अच्छे हों, राइट, बेटर हों, ताकि उनमें कोई कमी ना हो सके। इसके बेसिस पे ही आप देखेंगे एक ग्रेडिंग फ्रेमवर्क भी लाया गया है, जिससे उन वेयर हाउसेज को ग्रेड किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, राइट, एंड देन उनको यहाँ पे रेटिंग दी जाएगी, करेक्ट, जिसके लिए ये पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया, पहली चीज। दूसरा आ जाता है अन्ना मित्रा एप्लीकेशन। ये जो अन्ना मित्रा एप्लीकेशन है ना, ये आपका एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं
जो भी आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, राइट, उसमें जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने का काम करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक रिसिप्ट्स देखने को मिलेंगी, हमें मंथली सेल्स जो है उसका डाटा देखने को मिलेगा, एंड टाइम टू टाइम यहाँ पर आपके अलर्ट्स भी अथॉरिटीज़ को मिलते रहेंगे कि क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ को हम और बेटर कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अन्ना मित्रा एप्लीकेशन में, राइट। फिर इसके बाद आ जाता है सहायता, अन्ना सहायता एप्लीकेशन। ये अन्ना सहायता एप्लीकेशन क्या है? ये एक एडवांस सिटीजन सेंट्रिक रिड्रेसल, ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर लॉन्च किया गया है। इसके अंडर 5 पायलट स्टेट्स हैं जहां पे इसको अभी लॉन्च किया गया है, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा एंड यूपी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनके द्वारा एक पायलट अप्रेंटिसशिप स्कीम लॉन्च किया गया है यूथ के लिए इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखो अप्रेंटिसशिप क्या हो गया, इंटर्नशिप यहाँ पे प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा यूथ को, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। टारगेट है कि 26,000 से भी ज़्यादा यूथ को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, एंड 1,500 रुपये हर महीना मिलेगा उनको आने वाले 1 साल तक अंडर दिस स्कीम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो कि गुवाहाटी में है, उन्होंने NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इनके द्वारा मिलकर इस स्कीम को यहाँ पे लुक किया जा रहा है, मतलब स्कीम इनके अंदर ही यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम को डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम। सबसे पहले ये उल्लास स्कीम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। उल्लास एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो कि है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव। ये आपका इनिशिएटिव है बेसिकली कि लोगों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। जो अडल्ट जिन्होंने किसी भी रीजन की वजह से अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया, उनको भी यहाँ पे हम एजुकेट कर सकें एंड उनकी हेल्प कर सकें ताकि वो एजुकेशन ला सकें, स्किलिंग हो सके उनकी, एंड वो जॉब रेडी हो सकें। NEP 2020 के अंदर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला कि मिजोरम ने डिक्लेयर किया कि वो इंडिया की पहली फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम करंटली अचीव्ड 98.2% लिटरेसी एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23-24 के हिसाब से, राइट। तो बात करें उल्लास इनिशिएटिव की, ये अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इन्होंने हेल्प किया मिजोरम को टू अचीव द फुल्ली लिटरेसी स्टेटस जो कि है 95%, एंड इन्होंने कितना अचीव कर लिया है? 98.2%। अगर हम मिजोरम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? लाल दहोमा जी। गवर्नर कौन रहेंगे? विजय कुमार सिंह, एंड कैपिटल क्या है यहाँ पे? ऐजवाल। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी इंडियन आर्मी के अंडर स्पीयर कॉर्प्स, इन्होंने NDRF के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका नाम है एक्सरसाइज राहत। ये एक्सरसाइज हुई कहां पर? ये दीमापुर नागालैंड में हमें देखने को मिली। 13 से 15 मई तक इस एक्सरसाइज को देखने को मिला, एंड पहले 2 दिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड सिनेरियो बेस्ड डिस्कशंस हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इनके द्वारा एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया गया है। 5 रुपये का ये कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रहेगा, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एंड ये लॉन्च किया गया टू सेलिब्रेट 125 ईयर्स ऑफ कोडेकनाइल सोलर ऑब्जर्वेटरी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसका जो इवेंट हुआ था जहाँ पे ये कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप लॉन्च की गई, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे एक H अल्फा इमेज रहेगी ऑफ द सन टेकन एट द KSO ऑन 6 मई, एंड ये जो KSO है ये 2343 मीटर्स की हाइट पर हमें देखने को मिलती है अबव सी हिल्स एट पलानी हिल्स इन तमिलनाडु, एंड ये इंडिया की ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं DPIIT, इन्होंने एक MOU साइन किया GEAPP के साथ फॉर क्लाइमेट टेक एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। आई रिपीट, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, इन्होंने MOU साइन किया न्यूयॉर्क USA बेस्ड ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ फॉर पीपल एंड प्लेनेट, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, राइट, हम उनकी हेल्प कर सकें। कैसे हेल्प करेंगे? फंडिंग के थ्रू, मेंटरशिप के थ्रू, एंड उनको वेरियस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा के, ताकि ऐसे स्टार्टअप जो कि हमारे एनवायरनमेंट को और बेटर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, वो सामने आ सके। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अफेयर्स पे। ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीट हमें देखने को मिली ब्राजील में। ब्राजील के पास याद रखेंगे स्टूडेंट्स ब्रिक्स की
चेयरमैनशिप है। इससे पहले रशिया के पास थी एंड रशिया में ही अगर आपको याद हो तो कजान डिक्लेरेशन साइन हुआ था, राइट। तो कमिंग बैक, ये ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीट हमें 2025 की ब्राजील में भी देखने को मिली। एंड इंडिया की तरफ से मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इनके द्वारा यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया, करेक्ट। इसकी एक थीम याद रखेंगे इस इवेंट की, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। एक और चीज यहाँ पे इंडिया के द्वारा हाईलाइट किया गया कि हमने 475 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को अचीव किया 2025 में, जो कि 90% इंक्रीज है कंपेयर टू लास्ट डिकेड। इंडिया का टारगेट है कि हम 900 गीगावाट ऑफ एनर्जी जनरेशन पे पहुंच सके बाय 2032। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? न्यू दिल्ली में। इनकी 9th रैंक आई है एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर 24-25 एज पर द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। इसके द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन, जो कि यूएसए में है, इन्होंने 108 मिलियन पैसेंजर्स को बेसिकली इतने पैसेंजर्स को इन्होंने यहाँ पे हैंडल किया इन 2024। फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकंड, थर्ड डेलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फोर्थ टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिफ्थ इज लंदन एयरपोर्ट एंड 9th पोजीशन पे आ जाता है इंडिया का कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम बात करें इसकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कितने लोग हमने हैंडल करे 2024 में, तो ऑलमोस्ट 77 मिलियन पैसेंजर्स को हमने यहाँ पे हैंडल किया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूएसए अभी इंडिया का 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। हमने यूएई को सरपास कर दिया ताकि हम यूएसए के 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन सकें। एंड यूएसए से हम 0.33 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से यहाँ पर हम ऑयल को, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें, इंडिया रिप्रेजेंट करता है 8% ऑफ द टोटल ऑफ यूएसए क्रूड एक्सपोर्ट्स इन अप्रैल 2025। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स आईआईएफटी, जो कि है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। ये न्यू दिल्ली बेस्ड है एंड इन्होंने अभी पहला ऑफशोर कैंपस खोला है दुबई यूएई में। इससे क्या होगा, इंडियन एजुकेशन को ग्लोबली हम प्रमोट कर सकेंगे, इंडियन वैल्यूज को प्रमोट कर सकेंगे, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के डिजाइन को, फॉरेन ट्रेड को, कैसे हम ट्रेड करते हैं वो हम वर्ल्ड में प्रमोट कर सकेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा एंड इंडियन एजुकेशन को यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन करने की बात की गई। यहीं पे आप देखेंगे IIFT's दुबई इनिशिएटिव फॉलोज द लॉन्च ऑफ IIT मद्रास, जो कि टंजानिया में भी लॉन्च किया गया है, राइट। तो IIT मद्रास इन्होंने अपना कैंपस कहाँ खोला था? टंजानिया में, राइट। ये भी मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं एंकैश। एंकैश मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एक इंडिया का लीडिंग स्पेंड मैनेजमेंट एंड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। इनके द्वारा अभी एंकैश पेमेंट्स गेटवे ये लॉन्च किया गया है, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पेमेंट सॉल्यूशन है दैट इज इंजीनियर्ड ताकि इंडिया के स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंड स्टार्टअप मर्चेंट्स को यहाँ पे हेल्प किया जा सके, SMB एंड स्टार्टअप्स को यहाँ पे हेल्प किया जा सके कि जो भी उनकी पेमेंट्स की नीड है, राइट, उसको हम कैरी कर सकें। अगर हम देखें, इंडिया ने ऑलमोस्ट 63 मिलियन SMBs एंड स्टार्टअप मर्चेंट्स को यहाँ पे कैटर करने की बात की गई। इंडिया की बात करें तो इंडिया 14 लाख करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमने सिर्फ मार्च के महीने में इतनी ट्रांजैक्शंस को हेल्प किया। अगर हम इतनी लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शन करने हैं तो जाहिर सी बात है कि फेलियर के चांसेस भी होंगे, तो 20-30% फेलियर्स देखने को मिलते हैं पीक आवर्स में, राइट। मैनुअल रिकंसाइलेशन देखने को मिलते हैं, स्लो डाउन देखने को मिलते हैं, राइट, एंड डिसजॉइंटेड सिस्टम्स ऑफर नो यूनिफाइड कंट्रोल अक्रॉस पेमेंट्स एंड स्पेंड। तो इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करके एंकैश पेमेंट गेटवे यहाँ पे हेल्प करेगा ताकि बेटर तरीके से जिन स्मॉल स्टार्टअप्स को, SMBs को हम हेल्प कर सके फॉर ट्रांजैक्शन। फिर आ जाते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, एंड इन्होंने अभी एक्सटेंड किया अपना एक फ्लैगशिप हेल्थ प्लान लॉन्च किया इन्होंने इंश्योरेंस का सुपर स्टार के नाम से, राइट, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टार फ्लेक्सी। तो ये प्लान लॉन्च किया गया है असेंशियल, प्रेफर्ड एंड सिक्योर कैटेगरी में, यहाँ पे 3 चीज़ों में लॉन्च किया गया है फॉर कैटरिंग डिफरेंट कस्टमर्स। अगर मैं बात करूँ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ऑफ स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की, तो मिस्टर आनंद रॉय यहाँ के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। मूविंग ऑन, MMRDA जो कि है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने सिक्योर किया 1500 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो ये स्लम है, इसको रीडेवलप करके यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल्स बनेंगे,
हॉस्पिटल्स बनेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर्स बनेंगे। देन इसी के अंडर हम देखेंगे आपके जो स्लम डेवलपर्स हैं उनको 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट्स देखने को मिलेंगे एंड ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट रहेगा एंड एक्सपेक्टेड है कि 5,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर अपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि इन स्लम डेवलपर्स को, जो यहाँ पे इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको यहाँ पे इन फ्लैट्स में फ्लैट्स दिए जाएंगे, राइट। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 15 साल का लोन मिलेगा यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, ठीक है। 8,000 ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपए अभी यहाँ पे सिक्योर करे गए हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? निधु सक्सेना। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स HDFC बैंक, इन्होंने लॉन्च किया बिज प्लस करंट अकाउंट्स को टू सपोर्ट द MSME सेक्टर। आई रिपीट, इससे क्या होगा, जो MSME सेक्टर की ग्रोइंग नीड्स हैं, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेसेस को ग्रो करने में डिफरेंट, जैसे मान लो डिफरेंट स्टेजेस हैं, सेटअप कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं या डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अलग अलग रीजन्स में, तो ऐसे टाइम पे फाइनेंस की जरूरत होती है। तो उस टाइम पर यहाँ पे MSMEs को हेल्प करने के लिए ये HDFC बैंक के द्वारा बिज प्लस करंट अकाउंट लॉन्च किया गया। अब देखो, बिज लाइट प्लस है, बिज प्रो प्लस है, बिज अल्ट्रा प्लस है एंड बिज अलाइट प्लस है। ये 4 तरीके के लॉन्च किए गए। इसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे स्टूडेंट्स। इंडिया की बानू मुश्ताक एंड दीपा भाष्ती, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीत लिया 2025 के लिए फॉर हार्ट लैम्प। ये इनकी नॉवल है, राइट। ये कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, एंड इनको यहाँ पे बानू मुश्ताक एंड दीपा भशिष्ठी को इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, राइट। एंड याद रखेंगे, बानू मुश्ताक ये पहली कन्नड़ा ऑथर बन गई हैं एंड पहली मुस्लिम वीमेन इंडिया से जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता है। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है चाइना की मियाओ लीजी एंड जापान के यूको ओगा, इनको एम्बेसडर्स नेम किया गया फॉर फीबा वीमेंस एशिया कप 2025 का। ये फीबा वीमेंस एशिया कप 2025 का 31वां एडिशन रहेगा, राइट। इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है फीबा के द्वारा। ये होगा कहाँ पर? शेंजन चाइना में, एंड आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ पे शेंजन चाइना में हमें ये इवेंट होता हुआ दिखेगा। इसके बाद आ जाते हैं CCI अप्रूवल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अप्रूवल्स देखते हैं। जैसे बजाज ग्रुप का अप्रूवल आया टू एक्वायर अलायंस स्टेक इन इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर 24,180 करोड़ की लागत से, ये पहला अप्रूवल। दूसरा है नजारा, राइट, अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन नजारा। कौन एक्वायर करेगा? अक्साना एस्टेट, प्लूटस एंड JFPL, ये एक्वायर करेंगे नजारा में। देन टेमासेक होल्डिंग जो कि सिंगापुर बेस्ड है, इन्होंने हल्दीराम स्नैक्स में अभी स्टेक एक्वायर किया है। या आप मुझे बता सकते हो होमवर्क में कि कितना स्टेक इनके द्वारा एक्वायर किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिंगापुर के सिंगटेल, इन्होंने अपना 1.2% स्टेक भारतीय एयरटेल में सेल कर दिया टू कितनी अमाउंट के लिए? 1.54 बिलियन डॉलर के लिए, या फिर 13,182 करोड़ रुपए के लिए, या फिर 2 बिलियन सिंगापुर डॉलर्स के लिए। आई रिपीट, सिंगटेल ने अपना भारतीय एयरटेल में 1.2% स्टेक सेल कर दिया है। किसको? इन्वेस्टमेंट आर्म है मॉरिशस बेस्ड पेस्टल लिमिटेड को, 1.54 बिलियन डॉलर की लागत से। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। पंकज अडवाणी, इन्होंने 3rd कॉन्जिक्यूटिव CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल को जीत लिया 2025 का। मुंबई महाराष्ट्र में इसका इवेंट हुआ था। नेक्स्ट ऑबिट्री पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। पद्मा विभूषण अवार्डी MR श्रीनिवासन, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। काफ़ी फेमस इंडिविजुअल हैं ये, फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, एंड इन्होंने जो भाभा एटॉमिक जी हैं डॉक्टर होमी भाभा, राइट, उनके साथ मिलकर न्यूक्लियर रिसर्च अप्सरा के ऊपर भी काम किया था। 1955 में इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को ज्वाइन किया था। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था जो कि इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अभी 2015 में। देन पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1990 में, एंड पद्मा श्री से इनको सम्मानित किया गया था 1984 में। इसके बाद बात करते हैं नोटेड एस्ट्रोफिजिस्ट एंड पद्मा अवार्डी डॉक्टर जयंत विष्णु नादलेकर जी, इनका भी अभी निधन हो गया है रिसेंटली एट द एज ऑफ 87, पुणे महाराष्ट्र में, राइट। इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1965 में। देन पद्मा विभूषण से जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2004 में, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, काफ़ी फेमस इंडिविजुअल हैं ये भी, राइट। फिर इनको कलिंगा प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है 1996 में यूनेस्को के द्वारा। महाराष्ट्र भूषण जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उनसे सम्मानित किया गया था 2010 में, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी इनको 2014 में सम्मानित
किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल टी डे, 21 मई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। टी जो एक कल्चर सेलिब्रेट करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस जो है टी का अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा कंजप्शन हमें चाइना में देखने को मिलता है टी का, ये भी याद रखेंगे। 21 मई को हमने इस बार छठा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ये डे हम 21 मई को ऑब्जर्व करते हैं, राइट, कल्चर को प्रमोट करने के लिए कि कल्चर किसी भी एरिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, पहली बार 2003 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर आ जाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। टेररिस्ट के खिलाफ एक जंग छेड़ने के लिए एंड टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड बेसिकली 21 मई ही क्यों? क्योंकि इस दिन जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं एंड छठे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, लेट राजीव गांधी जी, इनका निधन हो गया था। कैसे निधन हुआ था? इनको असैसिनेट किया गया था 1991 में, राइट। एक सुसाइड बॉम्बर थे, इनके पास आके वो फट गया बॉम्ब, सुसाइड कर लिया उन्होंने, बम फटा एंड इनका निधन हो गया था। इस साल 2025 में हमने इनकी 34th डेथ एनिवर्सरी देखने को मिली। इसी के अलावा याद रखेंगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जो कि टेररिज्म की बात करता है। यहीं पे अगर हम देखें तो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 पहले है बुर्किना फासो, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड सीरिया, फोर्थ माली, फिफ्थ नाइजर एंड 14th पोजीशन पे आ जाता है हमारी कंट्री इंडिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। व्हाट वाज इंडियाज एक्सटर्नल डेट, हमारा कितना डेट था, राइट, एज रिपोर्टेड बाय इंडियाज क्वार्टरली एक्सटर्नल डेट रिपोर्ट एज बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024। तो कितना डेट था हमारा? 717.9 बिलियन डॉलर का हमारा डेट था। एंड रीजन क्यों डेट बढ़ता हुआ दिखा? क्योंकि जो वैल्यूएशन थी ना, जो डॉलर है वो अप्रिशिएट होता हुआ दिखा हमें पिछले कुछ महीनों में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अप्रैल 2025 रिपोर्ट जो मूडी रेटिंग्स के द्वारा रिलीज की गई ऑन इमर्जिंग मार्केट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर इंडिया जीडीपी इन FY26। तो क्या प्रोजेक्टेड है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर? वो है 6.5%। पहले प्रोजेक्ट की जा रही थी 6.7%, बट कहीं ना कहीं रिडक्शन देखने को मिली बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स जो अब हमें देखने को मिल रहा है। एंड इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंडिया में रिसेंटली सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे रिलीज किया गया, जो कि वल्चर पॉपुलेशन का डाटा बताता है। ये है तमिलनाडु के द्वारा। एंड ये ऐसा अगर हम देखें तो आपका थर्ड ऐसा सर्वे रिलीज किया गया है वल्चर्स के ऊपर, एंड अप्रॉक्सीमेटली 30+ वल्चर्स हमें तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ऑन अप्रैल UNESCAP, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये भी रिलीज की गई इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक। इन्होंने ये रिपोर्ट, पूछा जा रहा है क्या जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा इन 1/3 ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। मतलब कितना लॉस हमें देखने को मिलेगा जीडीपी का एशिया पैसिफिक रीजन में बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। तो ऑलमोस्ट इन कंट्रीज में अगर हम देखें तो 6% का लॉस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने पहला पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स को रिलीज किया, PAI बेसलाइन रिपोर्ट को रिलीज किया फॉर FY25 टू लोकलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आइडेंटिफाई करो स्टेट को दैट इज नॉट अमंग द टॉप 5 परफॉर्मर्स इन दिस रिपोर्ट। अगर यहाँ पे हम देखें तो गुजरात फर्स्ट पोजिशन पे रहा, तेलंगाना सेकेंड पे, त्रिपुरा थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, यूपी फोर्थ पोजीशन पे, महाराष्ट्र आपका फिफ्थ पोजीशन, करेक्ट, महाराष्ट्र आपका फोर्थ पोजीशन पे एंड यूपी आपका फिफ्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पे तमिलनाडु इस लिस्ट में नहीं है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 एयरपोर्ट जो अनाउंस किए गए स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स के द्वारा, जो कि मैड्रिड स्पेन में है हुआ, राइट। तो कौन सा इसमें से नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 एयरपोर्ट्स? सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट फर्स्ट पोजीशन पे, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकंड पोजीशन पे, टोक्यो नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो हनेडा, ये टोक्यो नरिता नहीं, टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका थर्ड पोजीशन पे, टोक्यो नरिता फिफ्थ पोजीशन पे, राइट। तो इसमें से अगर हम देखें तो हांगकांग इस लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट, मूडी एनालिटिक्स जो कि एक सब्सिडरी है मूडी कॉर्पोरेशन की, इन्होंने रिवाइज किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर CY25 डाउन टू व्हाट परसेंट? टू 6.1%, राइट। पहले 6.4 प्रोजेक्ट किया जा रहा था बट अब 6.1 प्रोजेक्ट किया जा रहा है।
Next, as per the report launched in April 25 by Niti Aayog, India's hand and power tools trade is a part of the global market currently valued at $100 billion. The global market is projected to expand to how much by the end of 2035। तो अभी $100 बिलियन की है ये हैंड्स एंड पावर टूल मार्केट, जो कि एक्सपेक्टेड है कि $190 बिलियन की हो जाएगी आने वाले 10 सालों में। एंड इसमें से एक्सपेक्टेड है कि इंडिया $25 बिलियन प्लस का यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, जिसमें मर्चेंडाइज एंड सर्विस दोनों इंक्लूडेड है फॉर FY25 एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट कितना रहेगा, 820.93 बिलियन डॉलर का, राइट। जिसमें से अगर हम देखें जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो है 437.42 बिलियन डॉलर का, राइट। वहीं पे इंपोर्ट देखें तो वो आ जाता है मर्चेंडाइज का, वो इंपोर्ट कितना आ जाता है, वो है 720.24 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY25 विद अ बायलेटरल ट्रेड रीचिंग 131.84 बिलियन डॉलर। तो इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर था USA, 131.84 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड हमें देखने को मिला। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है चाइना विद 127.7 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड देखने को मिला। एंड UAE थर्ड पोजीशन पे विद 100.5 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड। नेक्स्ट, किस इंडियन एयरपोर्ट ने सिक्योर करा 9th पोजीशन इन द पैसेंजर कैटेगरी इन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, इसकी 9वीं रैंक रही फ्रॉम इंडिया, या फिर 9वीं रैंक रही ग्लोबली। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रहा, USA का हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट, एंड 108 मिलियन पैसेंजर्स इन्होंने हैंडल किए 2024 में, जो कि एंड ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया था। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट रिलीज करी, द 2 बिलियन पर्सन चैलेंज। ये हाईलाइट करता है कि 3 आउट ऑफ 4 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड जो कि लो इनकम कंट्रीज में रहते हैं, उनके पास सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज का बेनिफिट ही नहीं है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई थी। एंड वर्ल्ड बैंक के भी एस्पायर जो कि है एटलस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर्स ऑफ रेजिलियंस एंड इक्विटी टीम के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्टेड रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर CY25 कितनी प्रोजेक्ट की गई है UNCTAD के द्वारा, तो 6.5% यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, इन अप्रैल किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को रिवील किया दैट ओनली 60% ऑफ द कंट्रीज हैव लेजिस्लेशंस और स्टैंडर्ड्स रेगुलेटिंग फूड एंड बेवरेजेस इन स्कूल, जो कि कंसर्न्स रेज करते हैं ओवर द ग्लोबल कमिटमेंट टू द स्टूडेंट हेल्थ। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज करी, राइट। ये आपकी रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को के द्वारा बेसिकली, राइट, कि यूनेस्को बताता है इनके द्वारा ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय टाइम्स हायर एजुकेशन इन अप्रैल 2025। तो वो है IISc बेंगलुरु, राइट। ये उस लिस्ट में नहीं है। अगर हम देखें टॉप में शिगवा यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे, पेकिंग यूनिवर्सिटी सेकंड पोजीशन पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड पोजीशन पे, एंड नैंगिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फोर्थ पर, एंड आपका फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ये 5th पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो घटती हुई दिखी है, राइट। 2023 में क्या परसेंटेज रह गया, जो कि 2011-12 में 16.2% था, तो ये घट के 2.3% पॉवर्टी रह गई है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। एंड 17.1 करोड़ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से लिफ्ट किया गया, एंड 37.8 करोड़ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि मूव्ड अबव द ब्रॉडर पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, वो है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैबोरेट करके ETRA रिलीज किया, जो है एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस असेसमेंट, जो बताता है फॉर डेवलपिंग एंड एशिया पैसिफिक रीजन्स के बारे में। इनके हिसाब से जो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट है डेवलपिंग एशिया में, वो 900% से बढ़ता हुआ दिखा इन्वेस्टमेंट 2013 से 2023 के बीच में। क्या वैल्यू हो गया है इसका, 729.4 बिलियन डॉलर का यहाँ पे हमें क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है इन द डेवलपिंग एशियन रीजन्स। Next students, let's move to the homework section. First question, Snack. This is a 15-minute food delivery platform launched by which company? Second, tell me recently who was conferred
with the Parvasi Bharatiya Samman Award during the 18th Parvasi Bharatiya Divas? When do we observe this day and who was honored here? Third question, tell me recently, if I ask you, when do we observe NRI Day? Give me the theme also, right? Parvasi Bharatiya Divas, same thing I've asked. Fourth question, World Hindi Day. When do we observe this? Fifth question, National Youth Day. When do we observe this? Give me their themes also. Right? Then apart from this, tell me one more question, that recently, you know that Mahakumbh was held, right? So in Mahakumbh, PhonePe, they partnered with which bank in order to provide insurance, right? Or to offer Mahakumbh Mela insurance. Tell me the name of that bank. So that's all for the day, students. These are your homework questions and I need to see maximum participation from all the students watching this video.